वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए पास पेपर लेके आया हूँ मैं इंग्लिश 201 के। तो ये इंग्लिश 201 की जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे सामने हैं। इसको आप ज़रा रीड करें और अपने मिड टर्म की तैयारी इजीली कर सकते हैं। ये चंद क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लेकर अपने यूट्यूब से देखिए, यहाँ से रीड कर लें तो आपकी मिड टर्म की तैयारी आसानी और भी इजीली हो सकती है। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, ये दोनों का डिस्क्राइब वेरीफाइड स्टोरी टेल स्टोरी। तो ये एक क्वेश्चन है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नहीं दिया होगा। इसका भी जो फार्मूला शुड प्रोवाइड ऑफ द बुल राइटिंग और द रिपोर्टिंग, ये क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट फॉर द फाइनेंशियल वर्ड्स एंड विच फंक्शन द परफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से रीड कर लें। व्हाट आर द फाइनेंशियल वर्ड्स एंड द विच फंक्शन दे परफॉर्म। फाइनेंशियल वर्ड्स इम्प्लाइड conjugation operations articles formatting financial words expenses the relationship among of the words। ठीक हो गया। व्हाट चूज आर द वे इन द इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड द इनफॉर्मल लेटर, एक ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। राइट डाउन द टेक्निकल दैट द यूज ऑफ द गेट द रीडर अटेंशन ऑन द ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द टेक्निकल दैट द यूज द गेट द लेटर अटेंट ऑफ द इंटेंस द लेटर begins the with the coins and to each other's attempt of the letter leads up to the main point of the among leader and test this action given to the header of the move completely। ये सारे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। व्हाट इज AIDA, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज AIDA, इसका क्या मतलब होता है? AID इज द प्लान एंड द स्पेसिफिकेशन वर्जन ऑफ द प्रोसेशन। इट इज द फार्मूला प्रोसीड अटेंडेंट इंटरेस्टेड डिजाइन एक्शंस। What is the business letter aliens at last their type of the business letter? Business letter are the commonly lettered full block formatted with the every line strongly at the left margin and the usually a business lectured at the top of the page. Give the guidance for the positive clause in the head of the news message. Following are the guidelines for the positive clause. Do not refer to the respected the bad news. Don't abolish for the discussions or revert any doubt in the verification of fact. Write down all the 5 advantages of the using writing mediums and the business communications. Writing mediums is the best when the do not need of the feedback. Advantage of the using writing the medium is that you can the writing the different and the complex message you can part of the content.
What are the benefits of the complainants in the message? Benefits of the complaints message are more. What are the benefits completion message? Benefit complaints. You are the student, business administrator, or the vision of government. What is the main and the difference objective difference of the objective or of the surely in the patient?